आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम और अखंड गोदावरी टूरिज्म प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा गया। इस तकरीब में मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत, नायब वज़ीर आला पवन कल्याण, राजमंड्री के रुकन पार्लियामेंट पुरंदेश्वरी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने बात करते हुए कहा कि अखंड गोदावरी प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राजमंड्री में प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखना खुशी की बात है और 2035 तक रियासत आंध्र प्रदेश में 30 लाख सयाह आएंगे। On the banks of river Godavari, it's my great privilege to stand before you in the historic city of Rajamundry on the banks of this sacred river on Pushkar Ghat. It's a moment of pride and purpose as I stand before you to share a story, the story of India's tourism, the story of India's tourism transformation, the story of tourism potential in our country. Dear friend, a story where culture meets commerce, heritage meets hospitality, and spirituality meets sustainability. Under the bold and transformative leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi Garu, and under the regime of this double-engine government in state of Andhra Pradesh, tourism in India has moved from being a sector of potential to a pillar of progress. Dear friends, in 2023, tourism contributed 10% in global economy. But if we look towards India, it contributes only 6% in the country's economy. And the momentum is only accelerating and continuously picking up. With over 3 billion domestic visitors and nearly 20 million international